Okay, welcome children. Now, today I am going to start the chapter weight, okay, and worksheet 1, okay. Now children, today's topic is how to convert one unit to another unit. Means किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो ऑल ऑफ यू नो चिल्ड्रेन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है. तो हम कन्वर्शन पढ़ेंगे. These are two type of conversion here. First is converting kilogram into gram. How to convert kilogram into gram? किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो चिल्ड्रन आपको पता चल रहा है किलोग्राम इट इज अ बिगर यूनिट एंड इट इज अ स्मॉलर यूनिट. ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट. So children, whenever we have to convert bigger unit to a smaller unit, then we have to the multiply. Okay? जब भी हम किसी भी bigger unit से smaller unit पे convert करते हैं, then we do the multiply. Okay? Now, to convert the kilogram into gram, we multiply the number of kilogram by 1000. Okay? Why we have to multiply by 1000? Because all of you know that 1 kg having 1000 gram. Okay, children? So, see the example 7 kg. How to convert into gram? All of you know that 1 kg having 1000 gram. So you have to multiply the number of kilogram by 1000. Okay. Now 7 into 1000 is equal to first 7 manja. Write down 7 and there is 30 in 1000. So you have to put 30 and write down gram. Okay children. Now 30 kg. How convert into gram? 30 multiplied by 1000. So when we convert kilogram to gram, we multiply the number of kg. Multiply the number of kg by 1000. Number of kg को 1000 से multiply करते हैं. So 13 manja only multiply the numbers. This is the shortcut way. This is the short way to multiplication. Direct method of multiplication. 13 manja 13 and after 1000 in 1000 there is 30, so you have to put 30 after 13. So your answer is 30,000 gram. Okay. Now second conversion is how to convert kilograms and gram. Children, see one more thing. In this question only kilogram is given. इस क्वेश्चंस में only किलोग्राम दिया, मतलब किलोग्राम मीन्स केजी. इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम. बट नाउ दिस क्वेश्चंस किलोग्राम एंड ग्राम बोथ आर गिवन. सी लुक एट 6 kg and 750 gram. In this questions kg and gram both are given. So how to convert into gram? अगर आपको kg और ग्राम एक साथ दिया हो तो दोनों ही यूनिट को कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते? इट इज वेरी इजी. हाउ? We convert the number of kilogram into gram. तो आपको क्या करना है? सिर्फ kg को number of kilogram को कन्वर्ट कर देना है ग्राम में. And after that add to it means जो kg को हमने कन्वर्ट किया उसको जो आंसर आया उस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया kg को, और जो आंसर आया आपको क्या करना है? उस ग्राम में फिर उसको ऐड कर देना है. Okay, so we convert the number of kilogram into grams. पहले kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, then add to it means this number is added to the number of gram. Okay children, so कैसे? See the example 6 kg and 750 gram. So you have to convert only kg, only kilogram, no, not gram, because it is already converted. Okay, so 6 into 1000 plus 750. 6 into 1000 means 6000 plus 750 is equal to 6750 gram. Okay children, now come to the next example. Same way 3 kg, only convert 3 kg and add it to the gram. Okay, 3 into 1000 plus 50. Now 3000, there is 3000 plus 50.
50 and your answer is 3015 gram. Okay children, so in this way you have to convert kilogram into gram and also converted kilogram and gram into gram. Okay children, so one more thing you have to must learn, whenever we have to convert kilogram into gram, then we have to multiply the number of kilogram by 1000. Okay children, thank you.